Yes, sir. Acha. So I am continuing the MRD-004 again. Okay, sir. So again, good evening to all learners. So that continue the entrepreneurship class. MRD-004 Abhimanyu. Hello. Hello Abhimanyu. Again, sir. Voice clear hochi? Sir. Acha. Sir. So registration करो आगे पहुंचलो माने मु बारंबार कहूची आगे मार्क योर रजिस्ट्रेशन इन मेसेज बॉक्स कहीं गोटे की रजिस्ट्रेशन कलो नहीं पंतो सो କରିଛୁ ସାର୍ Sir, କରିଦେଇଛୁ? कर देइछो ଆଜ୍ଞା। अच्छा Sir, କରିଦେଇଛୁ? so is a one of the very interesting topic entrepreneurship MRD 004 entrepreneurship and rural development the very interesting topic what mean by entrepreneur what do you mean by entrepreneur ओडिया रे कौन कहंती हेलो अभिमन्यु हेलो चर्चिता सर छोट छोट इंडस्ट्री सर अच्छा खांटी ओडिया रे चर्चिता हेलो चर्चिता Yes, sir. Yes, sir. स्पीक Sir, मते स्पीक जणा नाही. Sir, मते जणा नाही. उद्योक्ता बा उद्योगी Okay, sir. उद्योगी ओडिया रे द रीजनल लैंग्वेज ओडिया उद्योगी उद्योक्ता बा उद्योगी हला आर यू क्लियर हेलो Yes, sir. Yes, sir. yes sir okay so that we continue that meaning of entrepreneurship what mean by entrepreneur derived to one of the French language like entertainment entrepreneurship derived to one of the French language entertainment means amusement kariba so that nowadays in modern era or in modern age entrepreneurship plays one of the vital role for the country's economic development and growth गोटे देशर अर्थनीति विकास पाई एवं उन्नति आनिबा पाई उद्योक्तार बहु गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए स्पेशली रेफरिंग टू द रूरल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट this scattered small scale entrepreneurship that we can refer to entrepreneur here so that we know first of all try to understand clearly otherwise put question to me as here who is the entrepreneur so what is the role of the entrepreneur what is the importance and functions and basic concept of entrepreneur how can we clearly understand about the entrepreneurship who are the entrepreneur what is the role and important functions in rural areas so that first of all we try to understand that entrepreneur has derived one of the French word that is entertainment entrepreneurship or entrepreneur plays very important role vital role for the country's economic growth and development you know first of all so that is why entrepreneurship means that we know there are four important factors of production उत्पादन रे चारि गोटी मुख्य उपादान थाए that is you know land labor capital and organization these are the four important factors of production any production will be held so that we combine with these four factors of production जे कोनसी उत्पादन होई थाए ए चारि गोटी मुख्य उपादान दरकार पड़ि थाए so that is land out of these four factors of production land plays important role or primary factors of production भूमि होची उत्पादन रो मुख्य उपादान so factor input converted into output factor input वाला जो गुडा को raw materials labor capital एगडा होची factor inputs
So output refers to the finished product, that is usable product that provides for our utilization, amar ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ପଡିଥାଏ. So that is known as the output. So that in the production process, factor input converted into output. Like for example, iron ore as in mines, available in the mines area, in underground mines or open cast mines. Raw material are available in mines. So iron converted into pig iron converted into steel converted into machine tool. That final product is machine tool we are utilizing in our day-to-day life, like vehicle and electric appliances and other thousands of products, the factor output. So आमे बिलरे चाष जमी रे कोन करचंती धान बिहन बा विभिन्न शस्य आमे बुणी देकी आसुचंती, that is the factor inputs. Seeds factor inputs, manures, pesticides, labor, etc. Power tiller, tractor are factor inputs that converted input the final food grains, that is we are going to produce the final output, that is known as the output. So entrepreneur who perform these activities in the production process, that entrepreneur ये सबु कार्यक्रम होची उद्योक्तार काम बा एंटरप्रेन्योर रो मुख्य भूमिका. So MRDE-4 concerned with entrepreneurship and rural development. As entrepreneur, as French word, it emergence or derived the French word entrepreneur. So that is why in the as only towards the beginning of the 18th century one finds as it being applied to economic activities. Perhaps the essential connotation of this evolving application has been adventurism of some kind of others. That means as entrepreneur converted a factor input into output. That means there are large scale entrepreneur, 4 factors: land, labor, capital and organization. हमें जानिले. So land, the entrepreneur purchase land from the landlord. जने उद्योक्ता पाखरे किछि नाही ता पाखरे, सपोज से कोन करिवो भूमि मालिक पाखरु लैंड आनिबो एवं लैंड परे he will pay rent. The price paid to land is known as the rent. So land per labor. When the entrepreneur hire labor from the labor market, he will pay price to the laborer. The price in terms of wages. Mojuri akare se taku pradan karibo. Then the entrepreneur will collect funds or borrow funds from financial institution or from bank. So that he will pay capital. He will pay price to the capital to bank. That is interest. सुध दे इंटरेस्ट प्रदान करे बैंक को. प्रतिमा म्यूट करो, साउंड आछी. आ तो हेलो प्रतिमा मलिक म्यूट करो, साउंड आछी. हेलो सर म्यूट करो, साउंड आछी. मोबाइल टाको म्यूट करो, साउंड आछी. पढ़े होने. So that so last factor होची प्रोडक्शन के लैंड गला, लेबर गला, कैपिटल गला. लास्ट होची वन, that is organization बा organizer. So organizer बा organization को कहा जाए entrepreneur बा producer बा supplier. So entrepreneur plays one of the important role in country's economic development and growth. So that's why in this context that you will find out the entrepreneur activities as concept of entrepreneur, genesis of the word entrepreneurs, and non-recognition of entrepreneur. Ricardo, J.S. Mill, Alfred Marshall, and Schumpeter, J. Schumpeter. These are the people and theorists
those who write article on or books on entrepreneurship, about the concept of entrepreneurship, like David Ricardo, J.S. Mill, Alfred Marshall, and J.S. Schumpeter. All these are the writers of or theorists, those who write about the entrepreneurship. So entrepreneur, the basic concept of entrepreneur, as entrepreneur plays one of the important role for the country's economic and growth and development. So that's why, how can we define or clarify about the meaning of entrepreneurship? As the entrepreneur refers to the general trend of setting up a new enterprise. Entrepreneur are inborn quality. Entrepreneur inborn quality गोटा माने जन्मरु से तार गुण जना पड़ी थाए. So there are large scale entrepreneur, medium scale entrepreneur, and like small scale entrepreneur. So varieties of entrepreneur are there. So it is one, entrepreneurship was traditionally believed to be an inborn quality, and hence it was believed that entrepreneurs are born, not made. Entrepreneur inborn quality. Entrepreneur जने हब भविष्य रे से जन्मरु तार वासना जना पड़ी जाय थाए. It is not made. जन्म हेला परे entrepreneur सृष्टि ही न थाए. से जन्मरु पूरा मूलरु से सृष्टि होता है. तार क्वालिटी, तार एफिशिएंसी, तार नॉलेज जना पड़ी जाय थाए जे ए जने बड़ एंटरप्रेन्योर हबो एवं देशर अर्थनीति सुदृढ़ करि परिबो, देशर अर्थनीति को विकास पथ रे आगे नहीं परिबो. So entrepreneur is one of the inborn quality. Inborn quality. Recent duties have proved that entrepreneurship can be planned and developed through creation of opportunities, extending facilities, allowing incentive, developing sensitiveness. So entrepreneur is a person who has already started an enterprise or is in the process of starting of an enterprise. Hence, entrepreneur is one who organize, manage and assume, take risk and responsibility for his business. Entrepreneur innovates something. So entrepreneur innovates something. So out of the different theorists, one of the great important theorists known as J. Schumpeter. Schumpeter होचन जने विश्व विख्यात तत्वभित्तिक एनालिसिस करिसंती उद्योक्ता उपरे बा एंटरप्रेन्योर उपरे. से गोटे ब्यूटीफुल डेफिनेशन देइथिले. से डेफिनेशन ता तमे सब मन रखबा पय पड़ो. गोटा बड्ड डेफिनेशन देइथिले, संज्ञाटा देइथिले about the concept of entrepreneur. We know there are different theorists like J.S. Mill, Adam Smith, like your Alfred Marshall. एभली बहु प्रकार थियोरिस्ट माने अछंती जे कि उद्योक्ता बा एंटरप्रेन्योरशिप उपरे तत्वभित्तिक आलोचना करिसंती. तांको भितरे जे सुम्पेटर गोटे ट्रेमेंडियस डेफिनेशन प्रदान करथिले. मो तुमको डाकिबी वर्तमान तांकर डेफिनेशन ता बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथिबो. इन्वर्टेड कमा भीतर लिखिबो. सो खाता डॉट रखिछ, पेन आ पेपर रखिछ कि पाखरे? हेलो. यस सर. Yes. जेते थियोरिस्ट अछंती तांको भितरे हमर जे सुम्पेटर जने विश्वविख्यात थियोरिस्ट तत्वभित्तिक आलोचना करिसंती माने एंटरप्रेन्योरशिप उपरे. So basic concept and our meaning of entrepreneurship उपरे. So inverted comma भीतर लिख जे सुम्पेटर का स्पेलिंग मु डाकी दउची J dot सुम्पेटर SCHUMPTER J सुम्पेटर. राइट, लिखिलो. Yes, sir. अच्छा, स्टार्ट करो इन्वर्टेड कमा भीतर.
entrepreneurship can be defined ए डेफिनेशन टी तम ये बहिरु भी पाइबनी को बहिरु कहलो MRD 004 बहिरे भी नाही सेटा बुझि पाइलो सुम्पेटरकर ना अछि से बहिरे MRD 004 रे किंतु तांकर एही डेफिनेशन टी नाही तण मु सेटा तुमको डाकी दउछि लेखा एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज a creative activity comma as a creative activity comma creative activity comma the entrepreneur being an innovator कैसे comma दे के लिखियो the entrepreneur being an innovator comma दिया सेठी comma who introduces something new into the economy comma into the economy comma a new product a new method of product a new method of production a new method of production not yet tested by experience in the branch of manufacturing concern comma a product with which the consumers are not familiar comma a new source of raw materials unexploited and of similar innovation ହେଲା complete ହେଲା Yes, sir. so ready so जेते अछंती हमर जो थियोरिस्ट माने एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर जो मान सब लिखिचंती सेमान के भीतर जे सुम्पेटर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज थियोरिस्ट इज वेरी इंपोर्टेंट सो यू नो रिकार्डो अछंती डेविड रिकार्डो अछंती जॉन मिल अछंती एवं अल्फ्रेड मार्शल अछंती लाइक जे सुम्पेटर अछंती एई बले अनेक थियोरिस्ट अछंती तांका भीतर जे सुम्पेटर given one tremendous definition on a basic concept of entrepreneurship. So entrepreneur here J. Schumpeter given one important term and used here important term that is innovation. Innovation, what is the meaning of innovation? You know the pronunciation like invention. Invention
माने होची उद्भावन ओडिया रे इनोवेशन होची नूतनत्व नूतनत्व सो इन्वेंशन एंड इनोवेशन बोथ प्रोनाउंसेस सिमिलर एका भली शब्द उच्चारण आमे करूचंती इन्वेंशन एंड इनोवेशन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन हला उद्भावन इन्वेंशन ये जो उद्भावन जो शब्दटी दैट इज एप्लीकेबल इन साइंस ओनली विज्ञान रे एटा व्यवहार होई थाए हला फॉर एग्जांपल केमती इन्वेंशन होए विज्ञान रे with some chemical and tools we produce some new things in a laboratory गोटे परीक्षागार भितर आमे किछि केमिकल नबा किछि टूल्स नबा नेइकरी ताकू कंपोजिशन करी आमे गोटा नुवा प्रोडक्ट बाहर करिबा सो इट इज by the way of science so by the help of the invention we produce some new things so for example two hydrogen plus one oxygen मिसिले वाटर हे गला हमें जानि चंती H2O जोटा कहंती H2O two hydrogen plus one oxygen is equal to water that is water होची नुवा गोटा इन्वेंशन उद्भावन हला दुईटा केमिकल को बा हाइड्रोजन को मिसई गोटे ऑक्सीजन मिसई देले हमें जल पाइले so that is one of the scientific term but innovation is one of the commercial term used in business sectors in trading activities ए सबु शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य कमर्शियल वाणिज्यिक क्षेत्र रे ए शब्दटा व्यवहार होता है आज प्रोपाउंडेड बाय जे सुम्पेटर सो इनोवेशन जेभली इन्वेंशन गोटा विज्ञानी को आगु को नहीं जाई थाए विज्ञान को आगु को नहीं जाई थाए सेही भली इनोवेशन जने ट्रेडर्स को बा इंडस्ट्रियल ओनर को बा एंटरप्रेन्योर को ताकू आगु को नहीं जाई थाए एंटरप्रेन्योर को से डेवलपमेंट कराई थाए बाय द हेल्प ऑफ द इनोवेशन सो innovation like new market technique the exact meaning of innovation means new market technique new business technique new commercial technique नुआ व्यवसायिक वाणिज्यिक कौशल को कहा जाए इनोवेशन आज प्रोपाउंडेड बाय जे सुम्पेटर सो कौन नुआ व्यवसायिक वाणिज्यिक कौशल गुड़िक ना गोटे एंटरप्रेन्योर कौन करिवो प्रचुर प्रोडक्शन करिछि से प्रोडक्शन को करबा पूर्वरु से केते गुडी स्टेप नै थाए जे मु को जगह रे इंडस्ट्री स्थापन कले मते सस्ता रे कंचा माल मिलिबो मु को जगह रे इंडस्ट्री स्थापन कले ठीक रास्ता घाट संयोगीकरण हेई परिबो सहर बजार रु गाँ गंडा अंचल पर्यंत रास्ता थिबो कम्युनिकेशन सुविधा थिबो आख पाखरे कोठी हेवी डिमांड बा चाहिदा थिबो प्रोडक्ट उपरे कोठी सस्ता माल कंचा माल सस्तार मिलुथिबो कोठी लेबर श्रमिक सस्तार मिली परिबो ए सब होची इनोवेटिव थॉट गोटा भलो जगह रे भलो मार्केट खोजी करी पाइबा जोठी कि हेवी डिमांड मो प्रोडक्ट ऊपर थिबो लोक मानकर चाहिदा थिबो सो दैट इज द टेक्निक ऑफ इनोवेशन न्यू बिजनेस टेक्निक वी कैन से दैट इज इनोवेशन used by J. Schumpeter for the entrepreneurial activities. बुझी परिलो हेलो हेलो Yes, sir. अभिमन्यु हेलो अभिमन्यु आगे सर आगे सर इनोवेशन डिफरेंस बुझी पारलो तो इन्वेंशन और इनोवेशन मध्य रे डिफरेंस ता पार्थक्यटा बुझी पारलो हेलो अभिमन्यु सर अभिमन्यु हाँ सर बुझी पारली अच्छा हेलो इनोवेशन हाँ सर बुझी पारली इनोवेशन का कोड व्यवहार हुए इन बिजनेस सेक्टर इन कमर्शियल एक्टिविटीज हैला आज प्रोपाउंडेड बाय जे सुम्पेटर सो इनोवेशन कौन द इंट्रोड्यूसेस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट नुआ लोकों को आकृष्ट करिबा पई नुआ नुआ प्रोडक्ट सब प्रोडक्शन करिबा एवं न्यू टेक्नोलॉजी
नुआ वैषयिक ज्ञान बाहरी करवा फाइंड आउट न्यू मार्केट where there is heavy demand on my product, find out new source of raw material, find out where cheaply labor are available, and new organization एगड़ा सब होची innovation activities. बुझी पारलो? That is used in business sector, and hence the important role of entrepreneur, like your entrepreneur provides goods and services to the people. जने उद्योक्ता कौन करे? द्रव्य सेवा लोक मानक जोगई दी थाए. जने प्रोड्यूसर कौन करे? Produces goods and services supplied to the people. Entrepreneur supply components, parts, assembling, sub-assembling. An entrepreneur creates an entrepreneur culture in the society. Entrepreneur culture सृष्टि करी थाए से, which is useful creation and development of many entrepreneur and enterprise. तापरे various types of raw materials are found scattered throughout the country in small quantities, so that if there will be small entrepreneur will scatteredly prevail, so that they can utilize the raw materials available. Next, entrepreneur usually start small scale industries. Entrepreneur उद्योगी माने विशेष करी क्षुद्र क्षुद्र उद्योगी भावरे छोट छोट उद्योगी भावरे सृष्टि होइथांती विभिन्न अंचल रे, गां गंडा विशेष करी गां गंडा अंचल रे मिलुथिबा कंचा माल इत्यादि. So next, establishment of industries by entrepreneur at different places provides balanced economic growth. जदि क्षुद्र क्षुद्र उद्योगी छोट छोट एंटरप्रेन्योर गां गंडा अंचल रे सृष्टि हेबे ताला balanced economy गोटा संतुलन अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटी थाए देश रे हैला. संतुलन balanced economic growth development help possible. So due to the units of entrepreneur, economic progress of different regions takes place. विभिन्न आंचलिक भित्तिरे अर्थनैतिक विकास संभव होइथाय. So entrepreneur, due to the entrepreneurship, wealth of a nation is widely distributed among many people, many persons. The entrepreneurs not only creates a self-employment for themselves, but also provides a lot of employment opportunity for others. गोटे उद्योगी कौन करे ना सहरांचल गां गंडा अंचल रे क्षुद्र क्षुद्र उद्योगी जदि सृष्टि होइथांती आम देश रे ताहले कौन हबो? बालांस गोटा संतुलन अर्थनैतिक मानदंड देश रे सृष्टि होइताय. निजे रोजगार क्षम हवा सहित परिवार एवं पड़िसा रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि थाए करिथांती. सो सेहिथि पई मु एठी गोटे कांसेप्ट कहिबी महात्मा गांधी का व्यू आउ पंडित नेहरू कर व्यू मतामत. मु आगुरु कहिथिली गत क्लास रे जो पढ़ौथली हमर MRD 002 जो पढ़ौथली मु सेतबेले मध्य कहिथिली व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ पंडित नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. पंडित नेहरू कर मतामत कोन थिला देशर विकास पई, एवं महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशंस देशर जातीय पिता जे तांकर उभयंकर मतामत कोन थिला बा व्यू कोन थिला. सो देयर इज डिफरेंस व्यूज of both Pandit Nehru and Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi always focused on village development, rural development. Mahatma Gandhi सबु बेले गां रो विकास ऊपर गुरुत्व दउथले, कारण गां रो विकास हवा माने देश रो विकास होई परिबो. कारण भारत होची ग्राम बहुल राष्ट्र. एहार 80% रु अधिका लोक गां गंडा अंचल चाषबास चाषी अटंती, चाषबास ऊपर जीविका निर्वाह करितांती. तेणु गां गंडा अंचल रे जदि कटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स ये सब जदि कुटीर शिल्प सृष्टि पारिबो ताले गां रे छोट छोट उद्योग सृष्टि होई परिबे. गां रे परिवार रो सब लोक माने नियुक्ति पाई परिबे. गां रो विकास हबो. ये थिला महात्मा गांधी कर. एवं गां रो कृषि क्षेत्र रु जो फैक्टर इनपुट गुडी को प्रोडक्शन होतिबो से गुडी को सेइठारे विनियोग होई कि देश गां रो विकास घटिबो. सो पंडित नेहरू कहते जे मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण उपर से गुरुत्व दउथले. तेनु लार्ज स्केल हेवी इंडस्ट्री उपर पंडित नेहरू गुरुत्व दउथले मॉडर्नाइजेशन उपर. बुझि परलो? तेनु या होची सेति पई आम ओडिसा रे जबले राउरकेला स्टील प्लांट सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील प्लांट हेवी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रथम पंचवार्षिक योजना रे स्थापन करा दैथिला.
ऑब्वियसली गाँ एवं मुख्यतः सरकार गाँ गंडा अंचल पर विशेष गुरुत्व दबा उचित। सो हियर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कौन तार गुण हो पारे आउ सब सेल्फ कॉन्फिडेंस गभीर आत्मविश्वास हवा दरकार जने उद्योक्तार। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से सब बेले कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहिबा दरकार तार गोटे एंटरप्रेन्योर। सो नेक्स्ट होची रिस्क टेकर गोटे एंटरप्रेन्योर बहुत से विपद वर्ण करि थाए रिस्क नहीं थाए फॉर हिज बिजनेस। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग तार स्व चिंताधारा थाए गोटे उद्योग एंटरप्रेन्योर। इनर डायरेक्टिवनेस एंड लाइक मैनेजरियल स्किल organizing ability intelligence emotional tolerance achievement oriented visualization abilities and goal directed thinking persuasibility conflict resolving imaginative budgeting ability popularity reality oriented cooperativeness communicability reasoning ability and quality control capacity and high motivation ये सब समस्त गुण जदि गोटे व्यक्तित्व पाखरे थिबो से जने गोटे बड़ उद्योगी होई परिबो हला बा गोटे उद्योक्ता होई परिबो बा एंटरप्रेन्योर होई परिबो। से रिस्क टेकर विपद सही पारुथिबो तार स्किल नॉलेज एबिलिटी तेणु एंटरप्रेन्योर गोटा बाहुची कोन हमर इनबॉर्न क्वालिटी बा हमर जोटा कि जन्मरु तार गुणटा सृष्टि थाए ये जने एंटरप्रेन्योर होई परिबो। हां जेमति बिग एंटरप्रेन्योर लार्ज एंटरप्रेन्योर लाइक जमशेदजी टाटा 100 वर्ष रु ऊर्ध्व हम बिजनेस करूचंती से हम देश रे सारा पृथ्वी रे। सो एंटरप्रेन्योर कोन सब तार अछि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम कोन ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग मैनेजिंग कंट्रोलिंग ये तक 6-7टा इंपोर्टेंट फंक्शंस थाए एंटरप्रेन्योर रो। प्लानिंग से प्लानिंग करि परथवा दरकार कंट्रोल करि परथवा दरकार ऑर्गेनाइजिंग करि परथवा दरकार एवं कोऑर्डिनेटिंग करि परथवा दरकार एवं रूटीन वर्क सुपरविजन करि परथवा दरकार स्टाफिंग स्टाफ को ठीक रे मेंटेन परथवा दरकार। ये गुडी को सब होची एंटरप्रेन्योर रो फंक्शंस कार्यावली। अच्छा अच्छा यूनिट 1 तुम सब देखिबा कोन मार्क्स वेबर एंड सुपेटेरियन आइडिया डेविड मार्क सेलन आइडियाज थ्योरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप रॉबर्ट एल भाइन तांकर व्यू अछि ई हेगेन तांकर व्यू अछि थॉमस कोहरान तांकर व्यू अछि फ्रैंक डब्ल्यू यंग तांकर मध्य व्यू अछि। ए समस्तंकर थ्योरिस्ट मानकर सब विभिन्न प्रकार सब मतामत सब अछि एंटरप्रेन्योर ता भीतर जेते जे दैछथि मतामत थ्योरी ऊपर एंटरप्रेन्योर ऊपर जे सुम्पेटर का व्यूटा very important strong। तापर अछि जॉन एच कुंकेल तांकर व्यू अछि विभिन्न प्रकार थ्योरिस्ट मान अछंती ताकू सब एनालिसिस करिवो पढिवो। सो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोन नेचर कोन कैरेक्टरिस्टिक्स कोन जोड़ा हम आलोचना कले कमिटमेंट गोटे एंटरप्रेन्योर रो कमिटमेंट थिबा दरकार। हां एई काम हम करिबी अकाउंटेबिलिटी टू टाइम ड्यूटीज एटसेट्रा डिजायर फॉर रिस्पांसिबिलिटी दायित्ववान हवा दरकार। जे कोनसी कार्य से एंटरप्रेन्योर हाथ को नब से दायित्वबोध न रहिले गोटा उद्योगी हेई परिबो नाही। अपॉर्चुनिटी अवेशन से अपॉर्चुनिटी माने सुजोग को से अपेक्षा करी रहिबा दरकार। भलो सुजोग आसले से भलो बिजनेस स्टार्ट करिवो। टॉलरेंस फॉर रिस्क से रिस्क जो विपद आसी पहुंचे कारण अनेक घात प्रतिघात मध्य जने उद्योक्ता जने एंटरप्रेन्योर से समाज रे देशर अर्थनीति दृढ़ करिया पई छिड़ा होई थाए। सेति पई जने उद्योक्ता हवा पई ताकू अनेक प्रतिघात घात प्रतिघात सहय करिबा में पड़ी थाए। गभीर आत्मविश्वास थिबा दरकार सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास न हले जने उद्योक्ता हेई परिबो नाही। तापर क्रिएटिविटी थिबा दरकार इनोवेटिव आइडिया दे दरकार नुआ नुआ चिंताधारा ता मुंडरे थिबा दरकार ताले से जने उद्योक्ता हेई परिबो। हाई लेवल ऑफ एनर्जी थिबा दरकार ता पाखरे
हाई लेवल एनर्जी माने से केबे हेले पछुआ हवा दरकार नहे फॉरवर्ड and take risk and responsibility for his business motivation power थिबा दरकार जने एंटरप्रेन्योर रो से अन्य मानक मोटिवेशन दे पाथवा दरकार सो एई भली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर होची मुख्य भूमिका तापर आधरे हम अछि यूनिट 2 रे सब अछि कोन इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया भारत रे हमर एंटरप्रेन्योरशिप केबे कोन सब को समय रे ब्रिटिश समय प्री ब्रिटिश पीरियड during pre-British period, during British period, after British period, बिलात सरकार जेतବେଳେ शासन करूଥିଲେ तांको समय रे कोन सब थिला ना ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एंशिएंट इंडिया लाइक गिल्ड्स GUILDS गिल्ड्स का कुआ जाए गिल्ड्स माने व्यवसायी दल गोष्ठी से समय रे सब कोन होतला इन एंशिएंट इंडिया गिल्ड्स बिकम एन इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस सेतବେଳେ गिल्ड्स बा व्यवसायी दल व्यवसायी गोष्ठी मानकर बहुत माने गुरुत्व थिला से माने समाज रे कोन करूथिले इंपोर्टेंट फैक्टर इन अर्बन लाइफ जोठी गां गंडा छोट छोट अर्बन एरिया थिला शहरांचल रे से माने सब अधिकार प्रतिपत्ति जाहिर करथिले व्यवसायी गोष्ठी माने तांको कुआ जाय गिल्ड्स बोली कुआ जाय GUILDS गिल्ड्स बोली कुआ जाय से माने बहुत चालाक बहुत एफिशिएंट बहुत नॉलेजेबल से माने समाज रे जो गां गंडा अंचल रे एवं छोट छोट अर्बन अंचल रे जोटा हाथ बा कटेज इंडस्ट्री जो आर्टिसान मान थिले तांकु सब अधिकार करी तांकु मोटिवेशन करेकरी से काम धंदा को तांक ठारू सब छड़े आनुथिले ए जो गिल्ड्स माने हैला सो इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस इन अर्बन लाइफ बोथ इन देयर रोल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन इन शेपिंग पब्लिकेशन पब्लिक ओपिनियन सो आर्टिसान्स जो माने सब कला कृति हस्तकर्म सब जानी थांती being unable to compete with the guilds ए जो गिल्ड्स मानक सहित जो व्यवसायी दल सब नुआ नुआ गुड्स कमोडिटी आनी के अर्बन एरिया सब बिक्री करथिले तांको सहित कंपीट करि पार नथिले हमर जो भारतीय लोक माने भारतीय जो हस्तकर्म इत्यादि सब करूथिले आर्टिसान माने ए जो गिल्ड्स माने जो प्रोडक्ट गुडी काणुथिले तांको सहित कंपीट करि पार नथिले जा फल रे ए गिल्ड्स माने हम भारतर बाजार को दखल करने जेतले ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड तेणु तांको से जहा डायरेक्शन देबे हम भारतीय व्यवसायी मानकर कटेज इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री धीरे धीरे डाउन हो गला गिल्ड्स माने सब अधिकार करने गले सो इन फॉरेन कंट्री मध्य सही बळी एग्जैक्टली सो मेडिएवल टाइम रे सही बळी मेडिएवल परस्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी सही बळी समस्या मध्य देखा जाउथला तापरे एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल केवल शोषण करथिले ब्रिटिश कॉलोनियल माने व्हाट वाज इंपोर्टेड टू काउंटर बैलेंस ब्रिटिश सरकार कोन करथिले व्यवसाय करिबा पई आम देश रे मैनचेस्टर सब प्रोडक्ट सब आनुथिले आम देश रो कंचा माल नै जाउथिले तांको मैनचेस्टर रे सेगुडी सब कपड़ा इत्यादि सब वस्त्र माने तयारी करिकरी भारतीय बाजार रानी बिक्री करथिले जोथि पई भारत बाजार रे इंडस्ट्री को नुआ नुआ इंडस्ट्री सृष्टि करिया पई ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहन दौ नथिले तांको देश रे किबळी हाउ द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन विल बी हेल्ड पॉसिबल इन ब्रिटेन पर्टिकुलरली मैनचेस्टर रे जेतल यूरोप रे शिल्प विप्लव स्टार्ट हला 1800 मसिया रे विराट शिल्प विप्लव जेतल आरंभ हला so industrial development modernization growth held possible in Europe particularly in Britain so Manchester रे industrial expansion हला सेठी सब प्रोडक्शन सब हला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्लॉथ एवं अन्यान्य हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्ट ताकू सब आनी करी आम देश रे बिक्रय कले आम देश कंचा माल नेले कारण आम देश जो रॉ मटेरियल कंचा माल गुडी को मिलतला दैट इज वन क्वालिटेटिव वन विथ पेइंग less price to the farmers they are imported the product and after output making it output so that output and exported to our country and profit they are taken away from the farmers hence the Indian economy while it was a stimulus to the British economy भारतीय अर्थनीति कौन कला ब्रिटिश अर्थनीति को ताकू स्टिमुलाइजेशन कला डायनामिक ऑर्डर को नेला goods that were imported to India were factory made
products for mass consumption. It created a market for itself also in the rural areas, affecting the traditional cottage industry and created problems, unemployment, poverty. ଆମ ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା ବା କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତା ଦେଶରୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢି ଉଠିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ। ତ ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପଡିଲା। ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପଡିଲା ପରେ ନିଡ୍ ଫର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଯୋଉ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡିକ, ତାପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ। So that unfortunately the growing population and the vagaries of monsoon counterbalance the progress of the industrial front. Besides, there was a hardly any appreciable rate of growth of small and cottage industry in our country. As far as the prevailing rate of industrialization was concerned, given adequate time, there was slow expansion of demand and difficulty of supply of constraint were not much of a problem. So constraint सब देखा गला जो वर्ल्ड वार फास्ट हो गला पृथ्वी रे, तापरे तार सब प्रभाव पड़ला, आम देश रे प्रोडक्शन हो पारला नहीं। ब्रिटिश सरकार जेति की चुक्ति करथिले भारतीय शिल्पपति एवं कृषक मानक सहित ताहा संभवपर परिपूर्ण हला नहीं। तेणु आम देशर गाँ गंडा कटेज इंडस्ट्री गुड़िक धीरे धीरे लोप पाया पाए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री गुड़ लोप पाया पाए गला, कारण ब्रिटिश सरकार तांका देशरू विभिन्न प्रकार फैक्टर आउटपुट आनले आम देश रे विक्रय कले एवं ता प्रॉफिट को सेमाने सबू नहीं गले। नेक्स्ट थिला एंटरप्रेन्योरशिप इन सिलेक्ट कम्युनिटीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड रे सिलेक्टेड कम्युनिटीज जेबली तमिलीज, बेंगलीज, ओडिया, पंजाबी, मराठी ये सब होचंती ग्रुप सिलेक्टेड कम्युनिटी सब। बेंगलीज से बेले बेंगल रे ब्रिटिश सरकार जाहिर थिला से सबले सेठी सेमानकु प्रोत्साहन दउ नथिले। बेंगली लोक मानक विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री इत्यादि सेटअप करिया पई दउ नथिले। से बेले पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा कटेज इंडस्ट्री गुडी को ध्वस्त विध्वस्त होवा पई बसिला। तो तापर चलला कोन स्वदेशी मूवमेंट, आम देश रे स्वदेशी मूवमेंट सब चलला। आज द नेशनल मूवमेंट पिक अप, देयर वाज अ डेलिबरेट बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द पीपल। महात्मा गांधी आरंभ करदेले, देश रे विद्रोह आरंभ करदेले, को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट तादर सब जॉइन कले को माने सब जमशेदजी टाटा एवं बड़ बड़ शिल्पपति सब शिल्प संस्थार मालिक स्वदेशी मूवमेंट सब चलिला। ड्यूरिंग 1905 बेंगल पार्टीशन, thereafter was Swadeshi movement start in our country, and our concern is financed by negative capital and is under negative management throughout the country. The Swadeshi movement enabled much money to be mobilized and invested in industrial ventures and under the control of indigenous management. समस्त चाहिए जे आमर देशीय मैनेजमेंट रे आमर निजे इन्वेस्टमेंट करिबा, आम देश रे शिल्प संस्था स्थापन करिबा, किंतु ब्रिटिश सरकार सेउड को प्रोत्साहन दउ नथिले। तेनु स्वदेशी मूवमेंट चलला, ब्रिटिश बॉयकॉट पोड़ा जला हला, ब्रिटिश द्रव्य परिधान वस्त्र इत्यादि विभिन्न प्रकार गुड्स को महात्मा गांधी का आलोचना रे मीटिंग एवं सभा समिति करा जाई ब्रिटिश सरकार का द्रव्य गुड सब पोड़ा गला। क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, आईन अमान्य आंदोलन, भारत सारा आंदोलन रे सेगडा सब स्टार्ट हला। तापर एंटरप्राइज इन साउथ इंडिया सिनेरियो एगडा सब स्टार्ट हला सब आम देश रे धीरे धीरे। जमशेदजी टाटा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्वदेशी मिल रे आम देश रे केवल स्वदेशी मिल स्थापन हो पारिबो, स्टार्टेड बाय जमशेदजी टाटा आफ्टर द ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ द बेंगल in 1905. There was a unity of purpose between political leaders and the entrepreneurs during the Swadeshi movement. सेतबले कांग्रेस सरकार बा कांग्रेस यूनिटी करा जायतिला, जो कांग्रेस सरकार आंदोलन करूथिला ब्रिटिश सरकार के एग्नेस्ट तादरे सब बड़ बड़ शिल्पपति माने सब मध्य जोग दैथिले हला। ए जो शिल्प संस्था मानकरे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहा थिला, ब्रिटिश सरकार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सृष्टि करूथिले, ताको मध्य प्रतिहत
सब करथिले तापरे बॉम्बे रे बालचंद्र भट्टवादकर एंड लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ये सब शिल्पपति माने आर नोन आज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज सब ए माने तांका नाम होचे लक्ष्मण राव किर्लोस्कर बालचंद्रन तापरे लाला हरिकृष्ण लाल आरोरा एवं कार्तिकेयन राजा ऑफ भारत एमान सब होचंती इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एमाने तापर रहले जामशेदजी टाटा से सबु सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे एमाने सबु जॉइन कर देले कांग्रेस जो कांग्रेस कमिटी गठन करा गला ताथरे पंडित नेहरू महात्मा गांधी लाल बालपाल बड़ बड़ नेता देशीय नेता माने सब जॉइन करी एवं शिल्प विप्लव रे स्टार्ट कर देले हम देश रे ब्रिटिश सरकार द्रव्य सेवा को पोड़ा जला कले बॉयकॉट कले एवं किभली आम देशर पुराना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट सेरिकल्चर आम देश किभली शौखीन पुराना कालिया कल्चर संस्कृति को बजाय रखी आम देश किभली एगुड़ा पुनर्बार स्टार्ट करवा एथिरे सब आंदोलन रे समस्ते आसिक इनवॉल्वमेंट हो गले बुझी पारल सो ए थिला सब तमरा यूनिट 1 यूनिट 2 विभिन्न डिस्कशन तबे कथा होची कोन मो आउ ये क्लास नहीं नथांती तम क्लास पर दिन मते डॉक्टर दामोदर साहू कोऑर्डिनेटर अगेन ए क्लास नबा पई कंटिन्यूटी करिया पई एंटरप्रेन्योरशिप एमआरडी 004 कंटिन्यूटी करिया पई अगेन से मते डायरेक्शन देले तेणु मु अगेन मु तमर क्लास आउ थरे स्टार्ट करछि आज थारु बुझि पारलो अभिमन्यु चर्चिता Yes, sir. yes एक्चुअली टाइम नथला मु पुणी कंटिन्यू कली सार मते कहलारो मु पुणी थरे ए जो एमआरडी 004 एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट अगेन आई एम कंटिन्यूड फ्रॉम टुडे हला कंटिन्यू sir. करी Okay, sir. मु कंटिन्यू करी तापरे डॉक्टर डी साहू मझरे मझरे से मध्य कोदन केतबळ तांकर से कोडा पढौचंती एमआरडी 003 बोधे आगे आज्ञा। सर हां इटा से मझरे मझरे से कंटिन्यू करिवे मध्य हला आगे so to Sir. some extent are you clear about the entrepreneurial activities sure sir okay sir yes sir Yes, अभिमन्यु yes. अभिमन्यु Again, sir. Again, sir. अभिमन्यु immediately respond करे मु मार्क Again, करछि अभिमन्यु is so stimulated learners and he Thank you. immediately respond to my question so that it is very good symbol and also Charchita Sahu Thank you, sir. immediately they respond to my question so entrepreneurship गुडा होचे vast concept मन रखि थाओ entrepreneur अच्छा what is the difference between innovation and invention एडा परीक्षा सब आसे what in by invention what is the स्वदेशी Sir. movement हां को अभिमन्यु को सर इनोवेशन होची उद्भावन ना 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 इन्वेंशन होची उद्भावन सर इनोवेशन रे नूतनत्व जे इनोवेशन हां नूतनत्व राइट हां इन्वेशन है उद्भावन उद्भावन अच्छा यस सर इन्वेंशन ता होची गोटा वैज्ञानिक शब्द यस सर नहीं कि यस अच्छा सर इनोवेशन ता गोटा यूज इन बिजनेस सर कमर्शियल सर right innovation is one of the term used in business sector in commercial activities or in trading activities and this particular term is propounded by whom propounded by great theorist सर न्यू the great theorist सर J. Schumpeter. जे सुम्पेटर मन रहिला हाँ सर yes sir जे sir सुम्पेटर name गुड़ा problem करछि काहे कि हां प्रॉब्लम त करिवो because we are being Odisha people so that all these are the term of माने foreign countries people name so that अखडवा ना टिके सब कोन करिवा हाँ सर Alfred Marshall डेविड रिकार्डो जेस मिल ये सब विदेशी ऑथर माने विदेशी राइटर माने
ବୁଝିପାରିଲା ନା? Yes, sir. ସୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? सर ଜାମଶେଦଜୀ ଟାଟା ନା 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 ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର ମାନେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା sir, ଗାନ୍ଧୀ। महात्मा महात्मा Jawaharlal गांधी, Nehru? जवाहरलाल नेहरू. No, Jawaharlal Nehru given importance on the modernization. Heavy Oh, large yes, scale sir. entrepreneur ଉପରେ। हाँ, okay. Jawaharlal Nehru given the viewpoint of Pandit Nehru and viewpoint of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. It differ. Yes. It differ Yes, sir. Yes, from sir. the point of view entrepreneurship. From the point of view entrepreneurship, Mahatma Gandhi given rural importance on the rural development. महात्मा गांधी ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗାଁର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। This scattered entrepreneur should prevail in the rural area so that the equal balance and growth of the economy of the country will end possible. Small scattered entrepreneur will prevail in the rural area. ଯଦି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛୁରିତ ସ୍କାଟର୍ଡ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯଦି ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମହାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ସୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗିଭିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଚରକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ହାତେ କାଟି କୁଟି ଖାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା। ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ହାତେ କାଟି କୁଟିକିରି ଖାଅ, ଢେଙ୍କିରେ କୁଟିକିରି ଖାଅ ଏବଂ ହାତରେ ଲୁଗା ସୂତା ବୁଣ, କାଟି ପିନ୍ଧ, ରାଇଟ। କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ରାଇଟ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ହେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଫର ଦି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କଟନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କପା ଚାଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ରେଶମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ବା ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଲାଏଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଲାଏଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଉଟପୁଟ। ଆମେ ଘିଅ, ଦହି, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରି ଆମେ ବଜାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖୁ ଆମେ ପେଡିକିରି ଆମେ ତାକୁ ବଜାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଆମେ ଗୁଡ ବାହାରି କରିକି ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସୋ ଗାଁରେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ। ସୋ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇକ୍ୱାଲିଟି, parallel economic development growth will be held possible. The urban area and the rural area simultaneously will grow. So Mahatma Gandhi given importance and priority on the rural development particularly. And he given the importance on the rural employment opportunity, how available. We can eradicate the poverty if maximum people will given employment opportunity in rural area. We can reduce the poverty situation from the country. Per capita income of the individual in the rural area will increase simultaneously. It will have a very good impact to hike the national income. ଯଦି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। So I marked a full stop here in my counseling today. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. ରଖିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି